Hello students, today we discuss the next point in your unit 3rd, that is in molecular biology, that is the protein synthesis, or which is also known as the central dogma. So question asked for write short note on central dogma or protein synthesis. So what is central dogma? Central dogma is the place where transcription and translation processes takes place. सेंट्रल डॉग्मा हमें उसे उसे कहते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है. So in scientist Crick in 1958 has given the name central dogma to this two-step process of formation. That means the DNA conversion of DNA to RNA and RNA to proteins. So this central dogma is nothing but the protein synthesis. सेंट्रल डोगमा को ही प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है. और प्रोटीन सिंथेसिस मतलब डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होता है और आरएनए से प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं. सो द entire process of protein synthesis can be divided in two main steps. That is, one is the transcription and second is the translation. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है उसे टू स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है. उसमें से फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरी है ट्रांसलेशन. सो व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करना है और उसके बाद ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन हम दोनों सेल्स में देखेंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में. सो फर्स्ट we are to see in prokaryotic cells how the transcription process takes place in the prokaryotic cells. So first point is the introduction. In that, the transcription is a process of synthesis of which the mRNA the transcription. In the transcription, the synthesis of mRNA from the DNA takes place with the help of enzyme RNA polymerase. So this transcription is nothing but the RNA synthesis. यहाँ पे DNA से RNA प्रोड्यूस किया जाता है और उसमें जो RNA polymerase enzyme है वो हेल्प करता है. So this transcription occurs throughout the cell cycles depending on the needs. ट्रांसक्रिप्शन सेल साइकिल में होता है और जहाँ पे जब उसकी मतलब जब भी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने हो और जब भी उसकी ज़रूरत होगी तब वहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है. दिस ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द रीराइटिंग ऑफ जेनेटिक मैसेजेस कोडेड इन डीएनए इनटू आरएनए मॉलिक्यूल्स. सो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैरी करने के लिए डीएनए से उसका कोडिंग होके और कोड प्रोड्यूस करके वहाँ मैसेंजर आरएनए को दिया जाता है. सो इट इज़ वेरी शॉर्ट लाइफ बीइंग प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ वेरी शॉर्ट एंड इट ओनली हैपनिंग इन द प्रोटीन सिंथेसिस. So transcription is catalyzed by the enzyme RNA polymerase in both prokaryotic and eukaryotic cells. The DNA segment unwind before transcription.
तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले जो डीएनए है वो डीएनए अनवाइंड हो जाता है, दैट मीन्स सेपरेट हो जाते हैं, जो भी डीएनए स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं. देन आरएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड इन दिस प्रोसेस. तो तब वहाँ जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस छोड़ देता है और ऐड करता है. देन दिस आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शंस. The 3' to 5' strands of DNA from which RNA is transcribed is known as template or antisense strands. So the आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है, 5' to 3' डायरेक्शन, एंड द 3' to 5' strands of DNA from which RNA is transcribed is known as a template or antisense strands. तो जो उसके जो अपोजिट जो स्ट्रैंड्स है, जो आरएनए जो न्यू आरएनए सिंथेसिस होता है उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड्स रहता है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बोलते हैं, नहीं तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं. देन द 5' to 3' strands of DNA is known as anti-template or sense strands और दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड्स. तो ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आपको डीएनए जो डीएनए 2 स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो रहे हैं और यहाँ पे आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, आरएनए स्ट्रैंड्स. देन जो आरएनए स्ट्रैंड्स की जो अपोजिट स्ट्रैंड्स है, दैट मीन्स 3' to 5' स्ट्रैंड्स, उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बोलेंगे या तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स बोलेंगे. और जो स्ट्रैंड्स जो दूसरा स्ट्रैंड्स है, दूसरे स्ट्रैंड्स को क्या बोलेंगे, एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स. मतलब जहाँ पे आरएनए प्रोड्यूस नहीं होता है उसे बोलते हैं एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, और जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स. टेम्पलेट स्ट्रैंड्स में नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स है और जो एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है वो कोडिंग स्ट्रैंड्स है. देन सेकंड स्टेज that is the requirements for this transcription process. So first requirement is the promoters. So promoters are small sequence of DNA and which produces binding sites of the RNA polymerase. So it is present at 5' end and it is also called upstream ends. जो 5' एंड है वहाँ पे कुछ डीएनए सीक्वेंस, जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज को कुछ डीएनए सीक्वेंस वहाँ पे बाइंड होते हैं और कुछ डीएनए सीक्वेंस वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो न्यू आरएनए सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाए. देन second requirement is the terminators. So in terminators is the small sequence of DNA which providing binding site for termination factor. So after formation of the RNA strands, these need of the terminate this so there is the addition of some termination factors, that is the terminator, which is also a small sequence of DNA. So this termination factor is present at the 3' end and it is also called as the downstream end. Promoter sites को बोलते हैं upstream end, so terminator end को बोलते हैं downstream. Then third requirement in this process, this is structural genes. So these genes to be transcribed, जो genes मतलब जो those sequence which are transcribed
दैट नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। जो जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट्स करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दैट जीन्स नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन्स। Then fourth is the initiation factor. For transcription, initiation factor is the sigma factor. यहाँ पे sigma factor work as a initiation factor, and the Rio factor that act as a termination factor. Then sixth one is the RNA polymerase. So only one type of RNA polymerase transcribes these structural genes, genes of tRNA and rRNA. So this transcription unit is known as the operon in prokaryotes. So this enzyme or RNA polymerase also plays a important role to transcribe the structural genes or genes of tRNAs or rRNAs. So these are the requirements regarding the transcription process. Next is the actually which steps are involved in the transcription process. So the steps involved in transcription: first one, initiation; second step is the elongation; and third step is termination. So we start the step first, that is the initiation. In the initiation stage, at the stage, the enzyme RNA polymerase binds to the promoter site for initiation of transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए वहाँ जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स जो एंजाइम वहाँ पे यूज़ होता है आरएनए पॉलीमरेज को पहले बाइंड करते हैं. You have to see in this figure, in that at the 5' end there is the promoter, and at the 3' end there is the terminator. So and at the middle there is the structural genes. So this RNA polymerase bind to these promoter sites in first step. So is binding of RNA polymerase at promoter sites, DNA molecules untwisted, hydrogen bond breaks, and the transcription bubbles is formed. Once the double-stranded DNA denatures, the sigma factor initiates the mRNA with 3' to 5', the DNA strands acting as a template. तो जो पहले क्या होता है, जो प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट को एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है. बाइंड होने के बाद जो डीएनए स्टैंड्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं. उसके जो डीएनए स्टैंड्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और वहाँ पे एक बबल फॉर्म होता है, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन बबल. देन एट दैट साइड there is the sigma factor is add. Then the sigma factor initiates the mRNA formation with the direction of 3' to 5', and these DNA strands acting as a template strands. So जो structural genes है, the structural genes is converted into the transcription bubbles. You have to see in the figure, there is the promoter site at 3' and terminator site at 5'. Then at the middle portion there is the sigma factor, then RNA polymerase which is bind to this promoter site, and then the that is the separating the DNA strands, and hydrogen bonds will be break. Then there is the add sigma factor, and the sigma factor initiates the formation of mRNA with the 3' to 5' directions. So
this is the process. In that, the sigma start process, तो afterwards it leaves. जो सिग्मा फैक्टर्स का काम होने के बाद वो रिमूव हो जाता है. फिर हम फिगर में देख रहे हैं वहाँ पे mRNA फॉर्म हुआ है 3 to 5 प्राइम में. उसके अपोजिट है टेम्पलेट स्टैंड्स और दूसरा जो है वो है कोडिंग स्टैंड्स. सो इन देन these mRNA is growing, and then after addition of the termination factors, after adding the terminating factors, that is the Rio factor, these for mRNA coding will be stopped, and these mRNA or premature mRNA will be separated from the DNA strands. So in the elongation process, after about 8 to 10 nucleotides of RNA form and are linked to the DNA, then sigma factor dissociate. मतलब जब ये mRNA फॉर्म होता है mRNA में, वहाँ पे 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ जो रियो फैक्टर मीन्स सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर वहाँ से रिमूव हो जाता है. देन एट द टर्मिनेशन of the transcription is signaled by the controlling element called terminators. So this RHO, that is RHO, is used as a terminator, and it separates the RNA transcription from template strands. As the RNA chain grow, the transcripts of DNA molecules get bonded to same strands, and the two strands are near spirally coiled. Once the last nucleotide is added, enzyme RNA polymerase and RNA chain is removed. So the mRNA transcript functions directly as a mRNA for translation. तो यहाँ पे जो after formation of this mRNA, this mRNA is directly work for the translation process. So this is about the transcription process in the prokaryotes. Lastly, I summarize this process of transcription in prokaryotes. So first, what is the transcription? So transcription is nothing but the process of synthesis of mRNA from DNA with the help of enzyme RNA polymerase. So transcription means nothing but the synthesis of mRNA. Then these the RNA polymerase adds some nucleotide bases, and these RNA synthesis take place mostly in 5' to 3' directions, and the strands with 3' to 5' end, which is called as a template strands, and the remaining strands is a anti-template strands. So for requirement for this transcription process are the promoter sites, then or which is present at the 5' end, that are nothing but the small sequences of DNA which provides binding for the RNA polymerase. Then second requirement is terminator. Terminator is at 3' end, and that are also the small sequence of DNA which provides binding for the termination sites. Then structural genes, which are mostly the
genes which is used in the transcription or transcriptions. Then initiation factors are the sigma factor and termination factor is the rho factor. Then enzyme RNA polymerase, which is used only one type of RNA polymerase, which is used in for synthesizing the structural genes of tRNA and rRNA. Then what are the steps which are involved in transcription? That is initiation, elongation and termination. So at the initiation side there is the promoter site at 5 prime and terminator site at 3 prime, and in between the structural genes. When the binding of RNA polymerase at the promoter sites, these DNA molecules get separated, hydrogen bonds are breaks and the transcription bubble is formed. Hence, the doubles and the DNA denatures and sigma factor initiates the formation of mRNA with 5 prime to 3 prime end, and the DNA strands acting as a template strands. Then there is the addition of 8 to 10 nucleotides. These sigma factors will be dissociate. Then there is the addition of the rho factor that is used at the terminator site. Then once the nucleotide bases are end with these terminator factors, then these mRNA is or the premature mRNA is free from these DNA strands, and they can make functions directly for the translation process. So this is the first part, that is the transcription in the prokaryotes. In next video I talk on the transcription process in eukaryotes. So I hope all of you are understood this transcription process. So now I stop here.